And we are so much grateful to Dr. Khan's management and team for hosting us here today. And we are doing this very first episode of the Duck Stories 2022 here in Dr. Khan. So I think that deserves a round of applause. No? So women, no matter which field of work they come from, they've all experienced and are familiar with the notion of bias, right? We know of so many places and they really appreciate the women workforce. But still, there is this notion of, she can't do it. And when it comes to awarding them with what they deserve the most and even are most capable of, they are considered as secondary, if not tertiary choice. So many of us have internalized this notion and also show acceptance for it, but most of us today, we continue to fight for it and overcome it. So ladies and gentlemen, Telegram Velocity with Dr. Khan, we have collaborated to bring you the very first episode of 2022 of Duck Stories, and we're so happy that this is an in-person event. So all of you, thanks to you, because I know you must have been through COVID, you must have been vaccinated, and you are all here today. So congratulations, and please do applaud yourself for that. It's amazing how we've come out of this, deadly pandemic in 2 years and hoping that nothing goes wrong again. I have a panel of some amazing speakers here with me today. So I'll introduce them to join me, and I would request you all to please stay here because we are going to have an interesting session, interesting talk about breaking and challenging the bias in the startup ecosystem. Because this month is dedicated to women, we recently celebrated the International Women's Day. So we thought that we could somehow align our Duck Stories to the Women's Day and make it a special episode. And I'm so happy that so many men are also showing up, right? And one of our speakers is also representing the opposite gender as we speak, जिनकी वजह से हमें इतने biases face करने पड़ते हैं. And there is a reason why we have Fasi here with us and so many men in the audience. So before further ado, I would like to request my speakers. Fasi, he is the lead business operations Pakistan at Quibzil. Fasi, please join me. We have Dr. Junaira. She is the founder and CEO at MeraFuture.pk. And Nadia Parvez, she is head corporate innovation Telegram. Guys, please have a seat. Before I forget, I would like to mention that we have Nazia here from DevTalk, and so happy and proud to say that DevTalk was also one of our startups at the Telegram Velocity program in the 7th cohort. So happy to see them providing the interpretation services for today's panel. Thank you so much. So grateful, and once again, thank you for joining on very short notice. I would like to track this conversation with you, not only introducing yourselves, but telling me and the audience about your journey. So usually when people meet entrepreneurs and people with a profile that you all have, they just think, the success is flashy and all. But there is so much more to that success than meets the eye. And really, Duck Stories is all about celebrating failures, talking about failures shamelessly, and then learning from them. So, who would like to go first? Go ahead. Get into the ladies first. No, Madina said Fasi from minority. Okay. Fair enough. Thank you for giving minority chance. We want to reciprocate that every day. So, women are not a minority in this country, that's 51%. Thank you, Farah. Thank you, Tarun. It's always a pleasure to be here. And I'm more happy that one of my team members is now doing this, so very happy for her to be here.
सक्सेस के आपने बात की, I'll switch between English and Urdu अगर आपको सक्सेस इज वेरी रिलेटिव वर्ड। कुछ लोगों के लिए वो है जो दिखता है, जो फिजिकली टेंजिबल है, वो कहते हैं सक्सेसफुल। कुछ अचीव कर लिया, गाड़ी ले ली, प्लॉट ले लिया, पैसे बना लिए, अच्छी कपड़े पहन लिए, क्रेडिट कपड़े पहन लिए, लोग आगे सक्सेसफुल। मेरी नज़र में, मेरी अपनी नाकिस, मेरी अपनी नंबर में सक्सेस इज मेकिंग प्रोग्रेस। जिंदगी में कुछ भी आप करना चाहते हैं, कोई भी आप गोल है, उसमें आपकी प्रोग्रेस की आप आज आपकी दूसरे घर से देखकर उसमें सेटिस्फाई होना है, the real charm of being successful. So I think in that sense, my past 18 years of work life has been very successful, very fulfilling. Tried a lot of things, did a lot of work, and no success is without what you call failure or what you call setback. क्योंकि setbacks are making you move forward. आप learn करें उससे, आप आगे बढ़ें, so and keep on failing. लोग ऐसा कहते हैं कि इस बंदे से मिल रहे हैं किसी से, या किसी के बड़े के पास जाते हैं, उम्र के बड़ा ना भी हो, तजुर्बे में आपसे बड़ा हो, एडवाइस लेने, दाना है एडवाइस है, तो विजडम आती ही एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस आता है मिस्टेक से, और मिस्टेक्स को आप फेलियर के सेटबैक्स कैसे। तो आई थिंक they are the very part of the fabric that makes you who you are today. When you look back in those times when you've been through trouble or have faced issues or challenges or problems, had you not faced them, they would not have made you who you are today. So I think these are like tiny jigsaw puzzle pieces that make the whole picture. So that's it. मैं क्या करता हूँ? I look after business operations for a company called Quixel. We are a part of Epic Games. We were acquired by Epic 2 years ago. I can see a smiling head nodding, so probably you know. And since it's not a disclosed acquisition, I can say it's one of the biggest in the country. Great contribution by Pakistanis who build such sophisticated products that are recognized globally. And I look after strategic partnerships also for the region, for MENA as well, and looking after Pakistan partnerships for inshallah, or government and industry relations. So that's what I do. Thank you, Kasi. मेरा नाम ज़ुनैरा साकिब है, फाउंडर ऑफ मेरा फ्यूचर डॉट पी। मेरा फ्यूचर इज बेसिकली एन एप्टीट्यूड टेस्टिंग कंपनी। वी हेल्प स्टूडेंट्स टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर डिग्री। आई taught at NAST for 12 years, and my own background it's also been basically struggling as a student, not understanding that what I really want to do. So NAST पे जब 12 साल पढ़ाया, 12 साल पढ़ा के यही देखा कि मतलब दी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, वहाँ पर भी जब बच्चे आते हैं तो वो उनको पता नहीं होता कि हम यहाँ पे क्यों आ गए, हालांकि बहुत मेहनत करके वहाँ पर आते हैं। आई एम श्योर सम ऑफ यू कैन रिलेट टू दैट स्टोरी एज वेल, and I wanted to do something about it. So in 2020 I started working for मेरा फ्यूचर। एक मैं जरूर बात इंट्रोडक्शन में कहना चाहूँगी कि हमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो मिलते हैं जो कि कहते हैं कि when you go to this entrepreneurship journey, just burn all your course and just jump all in, and आपके पास जब कुछ भी नहीं होगा पीछे होने के लिए तो फिर आप सब मेहनत करेंगे। I am one of those people who deeply disagree with that, क्योंकि हम सबके पास तो privilege नहीं है। Not all of us come from privileged background। जब लोग कहते हैं कि you are not a risk taker, तो sometimes you don't have the privilege of taking a risk, क्योंकि एक फैमिली हम पर डिपेंडेंट है, हमारे बच्चे शायद स्कूल जाते हैं, शायद हमारे पेरेंट्स हम पर डिपेंडेंट हैं। So I would like to tell you that between 2020, the whole year, and 2021, I worked full time at NAST as well while running the startup. And the reason I'm telling you this is that maybe some of you are going through that journey जहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हो कि whether we should quit the full time job and do this full time or we should do part time। तो मैं आपको suggest करूँगी कि अपने circumstances के हिसाब से decision लें, motivational speakers के कहने पे ना लें, because that could be a disaster। So after 2 years, in last year in December, I finally quit my full time job and I'm working full time for Mera Future। But it was a 2 year journey that happened। So I just wanted to share that story because many times when you are in these sessions, तो बहुत से लोग आपको ऐसे बातें बताते हैं कि आपका दिल करता है कि बस मैं सारी चीज़ें छोड़ के कंपनी के लिए अपने काम करने लग जाऊँ। If you have the privilege, please do that। But if you don't, then see your circumstances and take a decision accordingly। So Mera Future has been operational for the past 2 years and we have been doing well।
we started the company जब कोविड का पता तो नहीं था बिल्कुल भी, जनवरी 2020 में started और मार्च में सब कुछ बंद हो गया। एंड आई थिंक अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि आपने रेवेन्यू कमाया या नहीं कमाया। मैं समझती हूँ कि एज एन एडटेक हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि हम कोविड के टाइम पे बंद गए एंड वी सर्वाइव फॉर 1.5 year, जिसके अंदर 90% ऑफ टाइम स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर क्लोज्ड। सो देयर वाज नो एप्टीट्यूड टेस्टिंग, देयर वाज नो कैडेट काउंसलिंग। बल्कि बच्चे, अगर आपको याद हो तो सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे थे कि हमने एग्जाम्स नहीं देने हैं, यूनिवर्सिटीज डिडंट नो व्हाट टू डू। सो ड्यूरिंग दैट टाइम वी सर्वाइव। सो समटाइम्स रियली सर्वाइवल इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। And Alhamdulillah, we passed through that from August last year. We have been doing well, and Mera Future has been doing well. But it's a difficult journey. So सिर्फ मैंने आपकी बात इसलिए बताई कि अगर आप में से कोई इसी ऐसे प्रोसेस से गुजर रहा है, किसी ऐसी तकलीफ से गुजर रहा है, कि क्रॉस रोड पे है, तो आई होप कि दिस लिटिल स्टोरी कैन हेल्प यू मेक दैट डिसीजन। सो दैट्स माय Thank you, Dr. Naira. Yes. So that was very impressive. Gee, that was, can you hear me? I don't know if this is working. So my journey is not as impressive as my prior speakers here. सबसे पहले before I introduce what I do professionally, I think for a key element, especially Pakistan, we are either wives or the mothers. So I'm a mom. I'm a single mother. And my other introduction is that I work for Telenor. It has been 4 years that I'm heading the corporate education. So करण ने सवाल किया सक्सेस का, फेलियर्स का। एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे फंसी ने भी कहा था, इट्स ऑल रिलेटिव। सक्सेस बहुत रिलेटिव, जो मुझे चाहिए ज़रूरी नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट देन अगेन द जर्नीज आर सिमिलर। हर सक्सेस में फेलियर है, फेलियर के बाद सक्सेस है। What it teaches you is a lot of resilience. हार नहीं माननी, give up नहीं करना। So it has been बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, मुख्तसर से 12 साल हुए। Why I'm here today is because women go through a lot of decisions on a daily basis, and I'm sure men do also. क्योंकि ये महीना ख़वातीन का हम सेलिब्रेट करें, वैसे तो हर रोज़ करना चाहिए, but then again there are certain choices that we have to make every day. शादी कब करनी है, क्या शुरू करना है, करियर प्रोग्रेस कैसे करना है, करियर ब्रेक्स लेनी है नहीं लेनी है, अगर हम ले लेंगे तो will it jeopardize our career, how will others perceive us. So ऐसे ही मुश्किल दौरान से मैं गुजरी थी, and I felt at that time I was working in the US. हम biases की बात बाद में करेंगे, but then again I felt that I need to polish my skills a bit further, and I applied for scholarship, Fulbright scholarship, when I went for research there. It was there that I saw that अगर हम bias की बात करें तो ubiquitous phenomena है, regardless age, gender, and then जैसे जैसे borders cross करते हैं तो और बड़े हमें biases feel करने पड़ते हैं या सहने पड़ते हैं. So success is a lot of lows and then a bit of high. But then जो चीज़ मैं आपको जब बताना चाह रही हूँ, जो मज़ा है, जो हाई है, जो नशा है, वो तगो-दो में है, वो एफर्ट में है, और वो फेलियर के बाद, डिप के बाद उस एक हाई का है, उसका मुकाबले नहीं. Even if you do achieve what you wanted, I promise you that feeling can never be replaced by जो डिप के बाद सक्सेस का. And the only constant that was with me throughout this time was, and I changed a few organizations, I tried a few professions, I was a corporate person at one point in time, I experimented education sector, now I'm leading again corporate sector, but then again my industry is for example startups. एक चीज़ जो कांस्टेंट है और जो डिफर करेगी सक्सेस को फेलियर से, वो है डिसिप्लिन. फीलिंग दैट्स नॉट योर ब्रेन, दैट्स नॉट योर स्मार्टनेस. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट स्मार्ट. आई एम आल्सो नॉट सेइंग दैट आई एम सक्सेसफुल, बट देन अगेन पीपल हु आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड will be able to make a difference, whether they're corporate professionals or they're entrepreneurs, like just what was there in our example side here. So I don't want to take a lot of time, and I'll
left for us other these two questions. Thank you, Nadia, and thank you everyone. I think we've already steered the conversation in the right direction, and I think people are all. I am curious, and I'm sure everybody else is. कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, tell us more. So on that thought, I just think that whether deliberate or unconscious, women have to make their headway towards success or even to survive, as we say. मुश्किल होता है, whether it is deliberate or unconscious, and to make sure that you are on the right path to success, the playing field has to be level, right? So I throw this question to all my guests. I would like to know, आपने ऐसा क्या किया to level that playing field within your capacity, whatever capacity that you've been working on? What did you do? Yes, Faisal. अच्छा, I cannot make any tall things क्योंकि हम एक ऐसे पोलराइज सोसाइटी का हिस्सा है जिसमें फ्रैंकली बहुत अरसे से बहुत दिहाइयों से हमने वुमेन को वो मकाम नहीं दिया, जिसकी वजह से आज की बात नहीं कर रहे हैं। ग्लोबली अगर स्टार्टअप वर्ल्ड की बात की जाए 2019 या 20 की शायद फिगर्स हैं मेरे पास, 19 की, less than 2% women founders got investment from global VCs just when we fundraise with it. ये 19 की फिगर है। It has changed, but it's not drastically changed, which means that it's not just a cultural issue over here, right? आपने कहा कि हमने क्या किया या मैंने अपने रोल में क्या किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जो किया तो उसे शेयर करता हूँ। बहुत पहले इदारे का नाम नहीं लूँगा, मैंने 7.5 साल गवर्नमेंट के लिए काम किया और तकरीबन 3 साल गवर्नमेंट के साथ काम किया एज ए सीनियर कंसल्टेंट इन वेलफेयर सेक्टर काम किया ऑक्सफोर्ड। और जब मैं गवर्नमेंट में था तो मैं एक पैनल में था, सीनियर हायरिंग मैनेजर ऐसा था जहाँ पे हम रिक्रूटमेंट कर रहे थे, और वहाँ पे मेरे लिए बड़ा ऑड था कि जब खवातीन आए इंटरव्यू के लिए तो मुझे सवाल ये करता है कि आर यू मैरिड, व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग टू बी मैरिड। जो आप वो कह रही हैं ना, आप सोचें कि मेरी हालत खराब थी, मेरे के बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी थे, कुछ इंटेलिजेंस भी थे, और डिफरेंट चीज़ों की निगरानी हो रही थी, कोई एक रोल नहीं था। मैं अपनी काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, आई हैव हायर्ड लॉट्स ऑफ पीपल डायरेक्टली अपनी टीम में भी और बाकी भी। मैं बड़ा ऑड फील करता कि क्यों, कैसे मैंने ऑब्जेक्ट भी किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए जी, हमने वहाँ से ना इनकी एफिकेसी कैलकुलेट करनी है कि अभी शादी हो रही है तो कमिटमेंट है, तो चीज़ें डिवाइडेड हैं और नहीं हैं। मैं हैरान हो जाता था कि कैसे सोच रहे हैं, ये चीज़ें मर्दों भी तो अप्लाई होती हैं, औरतों भी क्यों अप्लाई हो रही हैं। मतलब अगर आप मुझे हायर कर रहे हैं तो मैं अभी छड़ा छाड़ दूँ और मैं वो कहता हूँ कि अभी तो मैं सिंगल, अगर मैं ये कहता हूँ मैं कमिटेड हूँ, उसका भी मतलब समझेंगे कि मैं अपनी होने वाली बीवी अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत टाइम दे रहा हूँ, तो मैं जॉब पे टाइम नहीं दूँ। Why would you treat the other person because of the gender difference with a different lens? और इस तरह की और भी बहुत सारे और बातें आते हैं कि अगर मेरे फीमेल कॉलीग्स मौजूद हैं तो मैं बड़ा हेल्पलेस फील करता हूँ। सो इन गवर्नमेंट यू आर गिवन अ वेरी लिमिटेड बजट, वो पहले से प्री अप्रूव्ड होता है, तो ओनली वे यू कुड एग्जीक्यूट समथिंग डिफरेंट इज बीइंग इनोवेटिव, क्योंकि भारत सरकार के मामला में पेपर ट्रेल अप्रूवल्स टेक लॉन्ग टाइम। तो उसमें छोटा सा ये किया कि हमने अपने दफ्तर के अंदर कहीं पे कहा कि हम कोई एक बेसिनेट तो रख सकते हैं, एटलीस्ट अगर किसी का देखिए को करते करते वो देखिए में बदल गया, ठीक है, और उस पूरे टावर में एक वही कॉन्सेप्ट आगे लेकर चले। और जब मैं ऑक्सफोर्ड गया, उस इदारे के साथ काम किया और ट्रेनिंग में हमें ट्रेन किया गया, तो जब आपने इंटरव्यूज लेने तो आपने क्या क्या नहीं पूछना। और उस वक्त जिस तरह की मरिया कह रही थी कि वो बाहर गई और एक एक्सपोजर डिफरेंट हुआ, और आप रिलेट करते हैं जब आप ज़्यादा किसी और कल्चर से एक्सपोज होते हैं कि मेरे कल्चर में क्या डूज एंड डोंट्स अच्छे हैं नहीं हैं, यहाँ से क्या अच्छा है मैं अडैप्ट कर सकता हूँ। अमूमन तो बचपन में हम बड़े होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू परहैप्स बट आई ट्राइंग और बताया जाए कि जो कुछ वेस्टर्न है वो बुराई है या तो बुरे हया है या बुराई है, मतलब अच्छी चीज़ें भी है ना कि वो भी तो रहा बुरी को देखते हो। सो हमने अच्छाई जब देखते हैं किसी कल्चर में इमर्स होते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें अच्छाइयाँ क्या हैं जो हम इनसे देख आ सकते हैं। तो मैंने देखा कि वो
बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है. उधर द वर्ड यूजेस स्पाउस फॉर बोथ द जेंडर्स. उधर द वर्ड हस्बैंड एंड वाइफ तो है ही नहीं किसी फॉर्म में. उधर तो स्पाउस है. तो अगर एक स्पाउस वर्किंग है तो दूसरी स्पाउस को कॉम्पनसेट किया जाता है, चाहे कोई भी जेंडर. ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी. जब मैंने अगली कार्य को ज्वाइन किया मैंने कहा कि हम दोनों को कॉम्पनसेट करेंगे, डायरेक्टली करेंगे. तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने क्या करेंगे. तो सबसे पहला मेरे लिए था कि मेरी बड़ी मैटरनिटी लीव लेती और वो वापस आना चाह रही. और क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काम करते थे. तो हमने कहा कि हमें डे केयर बनाए. तो एक छोटा सा मीटिंग रूम था, उसको कन्वर्ट कर दिया. तो हमने कहा डे केयर भी कराते हैं लेकिन नर्सिंग रूम भी चाहिए, वो तो बच्चे को फीड करती है, प्राइवेसी भी चाहिए. करते करते वो एक बड़ा डे केयर बन गया. सब कुछ हुआ, हमने फंड भी ले लिया उसका. एक खातून को भी हायर किया, तो 5 बच्चे आ गए. तो फिर मैंने 5 बच्चे क्यों आए, उसलिए मैंने सोचा जब स्टार्टअप सप्लाई करती होंगी खवातीन, उनके भी जहन में ये होगा कि मेरी भी एक ड्रीम है, पर वो मैं ड्रीम कैसे फुलफिल करूँ. क्योंकि एक और ड्रीम भी तो है जो अनफॉर्चुनेटली हम मर नहीं लेके चल रहे हैं. वो है कि वो फैमिली को चला नहीं सकते. एक्सट्रीमली पावरफुल रोल दैट दे प्ले. Unfortunately, only in our culture played more by them than us. So how can it be a hindrance in pursuing your dream? This is the biggest gift of Almighty to become a mother. So what we did was we relaxed the rules for startups with a woman co-founder. We wanted to be positively biased to welcome them on board. तो मैंने देखा कि 23% से ज़्यादा लोग ही अप्लाई कर रहे थे जो खवातीन थी. तो हमने कहा A आपके लिए वर्चुअल होगा, B डे केयर होगा, और सी कि हम आपको प्रेफरेंस देंगे कि अगर आप फीमेल फाउंडर को फाउंडर आपकी टीम में, तो हम उन्हें इंटरव्यू करेंगे. तो हमने कहा कि हम यहाँ पे प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे आप जैसी और खवातीन को लेकर आने का, ताकि आपको उस इकोसिस्टम से सपोर्ट मिले. फिर अदर पीपल कैन टेल यू डोंट वरी, वी आर हियर टू टेल यू नो हाउ टू वर्क दिस प्रोग्राम. आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स वो 50% तक चलेगी. सो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मेरे पास चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिससे मैं कह सकूँ कि तो बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया मैंने जो पावर जेंडर, और जो थोड़ी बहुत ही एफर्ट्स की हैं और जिन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया उनमें से चाहिए. I think this is very impressive. You are being super modest, but I think if people like you, especially talking about your gender, if they do give it a thought to all of these aspects, actually the challenges, बहुत ही blessings हैं, but वो challenges बन जाते हैं. If so many people think like that, so I think बहुत सारी खवातीन आगे आएंगी and they'll do wonders. I actually really positive about that. Thank you, Fasi. Dr. Sunaira. Very impressive. I think ये वो आपकी मॉडल स्टोरी है कि आपने जो काम भी किया, काफ़ी काम किया आपने. पर मेरा ये कहना है कि स्मॉल चेंजेस मेक अ डिफरेंस. आपने पेटर्निटी लीव की बात की, तो आप लोग यहाँ बैठे थे. मैं आपसे आपको एक बात बता दूँ कि आई वाज गिविंग अ ट्रेनिंग एट अ बैंक. प्रीटी बिग बैंक है, वो ह्यूज ट्रेनिंग बजट, और वो जो ट्रेनिंग के बारे में जेंडर सेंसिटिव थी, और वो इसलिए थी क्योंकि वो स्टेट बैंक ने कह दिया था कि सबको जेंडर सेंसिटिव को ट्रेनिंग है. So I was discussing maternity and paternity leave with them, and they told me that recently paternity leave has been approved. So I asked them that has any of you gone and taken the paternity leave? I asked the men, and उन्होंने कहा कि हम गए थे, तो मैनेजर ने दी नहीं. And can you imagine कि उन्होंने क्या वजह बताई होगी ना देने की? मैनेजर मैंने डिक्लाइन कर दिया कि यू डोंट नीड पैटर्निटी लीव. आप लोग इसी कल्चर से ना पता है कि क्या वजह दी होगी. Take a guess, take a wild guess. मैं क्या मैनेजर ने कहा तुमने क्या करना? That's a serious thing, and most of the time this is what manager would say. तो managers का या in general culture का प्यार ये है कि if I'm allowed to say that, apart from donating, कि help in getting a kid, कोई मर्द का और कोई काम नहीं है, उसने रेज नहीं करना, उसने कंट्रीब्यूट नहीं करना. बल्कि बहुत सारे लोगों को तो मैं मजाक में उड़ाती थी कि कोविड के टाइम पे उनको पहले ही पता लगा मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है या मेरी बेगम के साथ में दर्द क्यों होता है. क्योंकि when they stayed home all day, they realized, oh, when I come home and say तुम सारा दिन करती क्या हो, तो एक्चुअली ये कर रही होती है. तो ये आई थिंक कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने की जरूरत है. आप इंडिविजुअल लेवल पे चेंज करें. I taught recruitment course for many years, and I used to tell them कि please, when you become managers, do not ask this question. आपकी शादी कब हो गई है कि नहीं, अच्छा कब हो रही है, अच्छा अगर होगी तो उससे आगे भी सवाल नहीं है कि बच्चा कब करने का इरादा है. तो वो लड़कियों को लगता है उनका रिश्ता इंटरव्यू शुरू हो गया
गया वहाँ पे, वो बेचारे अपने खोज में चली जाती हैं। और मैं मुझे कहती हूँ कि आप जैसे किसी ने कहा कि एक मर्द वहाँ बैठा है और वो कहता है कि आप उसे कहते हैं कि आगे बढ़ेगा या आता है, वो कहता है नहीं, यू बिलीव इट राइट। So when the woman is telling you that she is 100% committed to a job, तो आप अपनी परसेप्शन पे कैसे कह सकते हैं कि इसके क्योंकि 2 बच्चे हैं, या क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि इसका ससुराल ऐसा है, तो शी इज नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल। तो ये मेरी परसेप्शन है, मैंने अपनी परसेप्शन उस पर अप्लाई करके उसके लिए खुद ही डिसीजन ले लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू हायर। तो स्मॉल चेंज ये कि जब आप मैनेजर बने या आप हायर करें अपने स्टार्टअप के लिए, इसके लिए आप इस तरह के सवाल मत पूछें, ये छोटी सी एक तब्दीली है जो आप लेके आ सकते हैं। अगर आपको पैटर्निटी लीव मिलती है अपनी उससे ऑर्गेनाइजेशन से, तो प्लीज़ लें, घर पे कंट्रीब्यूट करें। एंड श्री मिजारी ने बात की थी कि उसने कहा था कि हम पैटर्निटी लीव तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम इज नॉट द पैटर्निटी लीव, द प्रॉब्लम इज द कल्चर, बिकॉज टिल द टाइम दे एक्सेप्ट दैट पैटर्निटी लीव इज नीडेड। मदिया कंफर्म के टेलीनॉर की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आई थिंक बोथ कैन डिवाइड इट। सो इफ अ मदर वांट्स टू कम बैक टू वर्क आफ्टर 3 मंथ्स, तो उसके जो 6 मंथ रह गए हैं वो अपने हस्बैंड को दे देती है। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट ये नहीं कि छुट्टी का, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अब नाउ माय हस्बैंड विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड व्हाइल आई गो बैक टू वर्क। क्या अगर हस्बैंड समझता है कि अच्छा पैटर्निटी लीव नहीं है मुझे ज़रूरत, तो मैं जो 3 मंथ्स अपनी वाइफ के उसमें ऐड करवा। तो ये छोटी छोटी चेंजेस हैं जो कि हम ला सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। आई थिंक कि बजाय इसके कि हम कहें कि बहुत बड़ी तब्दीली आए या कोई बहुत बिग बैंग हो, देयर इज नो बिग बैंग नीडेड। इंडिविजुअल लेवल पे वी कैन मेक दी स्मॉल डिफरेंसेस, सो आई थिंक ओवरऑल Absolutely, yes. I couldn't agree more. I have a personal experience working for an organization, and one of my male colleagues, he recently had the pleasure to become a father. And so I knew that he was away for not a long time, maybe like 5-6 days, but that was a good start, right? And I was speaking to another senior person of ours, and so there came a mention of this person who was away on paternity leave. And I said that वो आज available नहीं है, वो अपनी paternity leaves पे हैं. And the response was, नहीं क्या करना है? And I just went quiet. I just felt like there's no need to answer that comment because it's just ridiculous, if I must say. Thank you, Dr. Zamira, for sharing that. It's very, very empowering to hear that, because you as a woman stepped up and made it easier for so many other women, and I'm sure so many of us will follow suit. But yeah. So in some बातों से एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बात याद आ रहा था। Last year we hosted Women's Day party, a similar panel under Rasto, and one of the speakers we invited, in fact somebody was with us back then, was Oystein, जैसे अभी सुनने में बोला। So the Telenor group is an organization that is over 8 people. So he is based out of Oslo, and I invited him to speak. तो शुरू में जब पैनल डिस्कशन होती तो हम बेबी करते थे, आपसे ये सवाल करेंगे तो जिस तरह के सवाल थे कि वो गेटिंग वेरी अमेज्ड एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फादर टू हाउ चिल्ड्रन आर रेज्ड इन पाकिस्तान। उसने इंसिडेंट फोन किया, एंड जैसे कि मैंने कहा कि आई वाज द वन स्टेइंग होम विद माय डॉटर व्हेन शी वाज बोर्न फॉर 4 months, and it is very normal. So it's more to do with the kind of culture we have. Or I remember I was moderating that panel towards the end. It was like, look, the important thing that you need to do in Pakistan is find the right husband. That will make your work life very easy. So मैंने उसी वक्त वो ऐड हो रहा था सारी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, और उस टाइम I can go for another degree, probably to another PhD, but finding the right husband in Pakistan is one of the most, no offense to women. नहीं, मैं तो कहूँगा कि आप दोबारा बोलें, let's clap for it. So Norwegians who work with us, like we report to them, their colleagues, they find it very hard, why is the support not coming from your families, your husbands. However, I would like to give a lot of credit. This past 8 March का दिन होता है, I celebrate with a lot of posts, and I dedicate my success to my father, my brother, and the leaders who have been in the organization. Even Hasi himself, और ये बहुत modestly बोले हैं, उनकी काफी contribution है startup ecosystem खवातीन, हम जैसे खवातीन को support करते हैं। तो आप ही लोगों की वजह से, आप भाइयों की वजह से आप काफी support करते हैं। पर then अगर आपका सवाल था coming back to your question is how I need to show to kind of ensure inclusivity. Lo and behold, I find, and again no offense, I find women whenever I interview, although I
Pakistan especially, recent past में, I feel women are hard workers. हम इंटरव्यू करते हैं, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, and they come out with very clear rules. So Farah, I have 100% team where all are women. So that is my contribution I make. It's not in my bias because I'm a woman leader, but then honestly they are well prepared, they are honest, I feel. And उसके अलावा एक थोड़ा सा एक और टीम में बैठे हैं. It's very important for me because when I applied for Fulbright, and this is very personal anecdote and very new here, it wasn't an easy journey, right? I was facing a lot of bias because I was single mom then and I was working and I was a baby. मुझे कोई हैंड होल्ड करने वाला नहीं था. मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती. So I had to appear for a visa, I had to take tests, I had to appear for interviews. Nobody was there to guide me. So when I came back, it's very important for me to give back to you guys. So I mentor girls if they approach me, how to apply for Fulbright, if they want to. So towards the end, I'd love to share my email address. If anyone of you want to approach me later for any kind of mentoring, so in my personal capacity, I mentor ambitious, hardworking girls like yourselves. So please do reach out. Thank you everyone. You know, this has really set the tone. And so while I was doing my research for this panel, I came across some stats and I was shocked. And then I was like, हाँ ये तो होता ही है. So research says that 60% of women they face microaggressions at work, right? And this number is like shockingly high. Okay. But at the same time, as a woman, I was like, so many times I have felt so, but then somehow I have let it go, thinking के कोई फायदा नहीं है या फिर कौन सुनेगा, right? So firstly, this question is steered towards you. You have been in a leadership position for quite some time now, and as you just mentioned, you've done great things, but you know, particularly when there is microaggression. So first of all, तो आप थोड़ा सा audience को बता के दें what microaggression is, and then आपने खुद कभी अपने सामने होते हुए देखा है या फिर unconsciously have you been doing so, and when you learned that oh this is microaggression, what did you do? It's a lengthy question. सबसे पहली चीज तो ये कि अगेन मैं ये नहीं कहूँगा और assume नहीं करना चाहता यहाँ पे कुछ भी कि मैं माइक्रोएग्रेशन की सही डेफिनेशन जानता हूँ. मेरी नज़र में माइक्रो ना भी होता है एग्रेशन है. एग्रेशन है कि मैं किसी की भी साथ किसी भी किस्म की, चाहे उसको टास्क देने के हवाले से, चाहे उससे डेडलाइन साइन करने के हवाले से, या चाहे उसके साथ अपनी गुफ्तगू में, अपने रवैये में, अपनी टोन में चेंज करने के हवाले से डिफरेंट बदलाव है, या अपनी इमोशंस को ला के बीच में गलत टोन, गलत चीज़ों का पास इस्तेमाल करें, प्रेशराइज किया. अच्छा, ये बहुत एक ट्रिकी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ आजकल, क्योंकि men also sometimes have come to me and said कि आप ना उसको फेवर करते हैं मेरी फीमेल कॉलेज के हवाले से बहुत ज़्यादा, मेरे एक्स ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी बार हुई, और वो इसलिए कि आप हमें डेडलाइन ज़्यादा टाइट देते हैं, उसको नहीं देते और आप ये करते हो. तो मैंने कहा देखो, दोनों का करियर पाथ जो है ना बड़ा डिफरेंट है और दोनों के KPIs और मैट्रिक्स बड़े डिफरेंट है. तो तुम्हें रिलेट करना है तो किसी क्वालिटी पे, कॉन्फिडेंस पे जाकर रिलेट करो, ये जेंडर वाली बात पे जाकर रिलेशन ना बना. तो मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैंने जहाँ जहाँ देखा है रिलेशन अगर कभी आई है तो उसको अच्छा मैं बड़ा इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट है. बहुत सारे इदारों में और जो लोग यहाँ बैठे हैं जो देख रहे हैं उन्होंने सिस्टम्स और पॉलिसीज ऐसी नहीं बनाई कि आपकी फीमेल्स आपको, आपकी मैनेजमेंट को ट्रस्ट करें. कि अगर आप में से कोई आज उठ के अपने किसी कॉलीग से कुछ शेयर करता है या अपने बॉस से, तो कितना आप में ट्रस्ट है कि उसे ऑब्जेक्टिवली ट्रीट किया जाएगा और उसे उसके मंतव्य इंसान तक पहुंचाया जाएगा. बहुत देर हो गई, इंतहाई है इंसिडेंसेस मेरी लाइफ में बहुत है. हैरेसमेंट के लिए जो मैंने
कोशिश की है कि जितना ऑब्जेक्टिवली डील कर सके, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो ट्रस्ट हमारे कॉलीग्स को हमने होना कि मैनेजमेंट हमारे इंटरेस्ट में से और इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव है। ये नहीं है कि आप फील्ड में आप आ गए हैं फिर उसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। हमने ग्रीवियंस एड्रेसल सिस्टम्स कोशिश की है जहाँ जहाँ भी रहा हूँ ऐसे बनाए जिसमें एक ऑड नंबर ऑफ लोगों को मिलेंगे। पॉलिसी डिक्टेट करेगी क्या करना है, इंडिविजुअल डिक्टेट कभी ना करेगी क्या। पॉलिसी बनाए और पब्लिश करें, आप सब अपने लेवल पर पब्लिश करें। वर्क प्लेस हैरेसमेंट जब कानून भी लिखा तब भी हमने इसको प्रमोट किया, अपने जहाँ जहाँ कवर कर रहा हूँ ग्रीवियंस एड्रेसल सिस्टम को रिपोर्ट किया। ये एरियस के पीछे 5 लोगों को ईमेल आनी है, उन 5 के पास कितने घंटे का टाइम है कमेटी बनाने का। कमेटी में दोनों पार्टीज के टीम के लोग नहीं होंगे एग्रीड पार्टी के, और ऑड नंबर होगा उसके पास कितने दिन होंगे दोनों को हेयर करके दोनों के व्यूज प्रेजेंट करने में। कमेटी के पास इतना टाइम होगा देने का, मैनेजमेंट के पास इतना टाइम होगा रिसीव करने का। अब जब एक 8-10 पेजेस 5 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जो डिक्टेट कर रहा है तो आपको मालूम है कि मैं कैसे डिक्टेट करूँ, और अगर उसमें डिसीजन अच्छे आ रहे नहीं आ रहे और फिर आप पब्लिकली शेयर करें गवर्नमेंट के इदारों के नंबर्स जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे इनके समथिंग इज गॉन रॉन्ग। वो नहीं करते हैं तो फिर लगने को जाते हैं शायद। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो। आपकी फैमिली है, हम अपनी बहुत ज़्यादा टाइम अपनी तरफ पर गुजारा, उनको फैमिली भी रहने देते, जैसे हम अपने घर में अपनी फैमिली को, दीदी को, माँ को, बहन को, बेटी को देखते हैं, तो फिर रिलेशन बहुत ज़्यादा गंदा होगा। दूसरी चीज़ प्रमोशंस की जब बारी आती है, जब कुछ इवेंट करने की बारी आती है, मैंने बहुत कोशिश की है जहाँ जहाँ की है, लेकिन बहुत बार फेल हुआ। पैनल्स बनाते हैं तो हम मैनर्स बनाते हैं, पैनल टॉक्स मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे एटलीस्ट 50% वुमेन नहीं है ना, आज आप लोग जो बैठे हैं उस पैनल में जाना बनाया, और अगर जाना जरूरी है और नहीं मिल रहा है तो पब्लिकली बताएं कि हमने रीच आउट किया और नहीं मिली। मुश्किल है कि इस जवाब को जस्टिफाई करें, राइट। तो छोटे छोटे से स्टेप्स हैं ऐसे जो आप लोग भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले सकते हैं टू चेंज दिस, और छोटी छोटी चीजें ये जो बहुत मैटर करती हैं और रिपल इफेक्ट क्रिएट करती हैं। आई विल स्टॉप हियर, अ लॉट मोर टू टॉक एंड शेयर अबाउट how to control, but I would like to get the speakers to share their experiences. I love this quote, panels together matters. Yeah. So I think whenever you also organize such events, bear in mind that it's just so important to have different perspectives from different aspects and different genders, because otherwise no conversation is considered whole when all the different aspects are taken into account. मैं ये सवाल आप दोनों से नहीं करूँगी because I have different questions for you. I really wanted to take it Fasi's take on it. But I have a question directed towards Dr. Zunaira. मैं इसको बहुत categorically एक चीज़ को फ्रेम करना चाहूँगी because you have a startup, right? तो आपने एक जर्नी जो स्टार्ट की आपने इसके बारे में बताया. I think it's interesting to know कि आपकी जर्नी में obviously as a women-led founder बहुत सारे setbacks आए होंगे, ठीक है? Maybe when you were about to enroll yourself in an incubator, if at all you did, challenge आया होगा, mentorship. First of all, finding the right mentor and then the amount of mentorship matters, and then raising investments. Fasi quoted his stat in 2019 that I think 2%, less than 2%, ठीक है, which is definitely a shame, ठीक है? So उसके बारे में जरा बताइए कि इन तमाम स्टेजेस पे कैसे कैसे सेटबैक्स आए जो कि शायद बायस आपको लगा हो कि यार बिकॉज आई एम अ वुमन ये इसलिए मुझे ये चैलेंज है, अगर इफ आई वाज अ मैन ठीक है तो ये चैलेंज नहीं होता। प्लीज Before I go into talk about my ecosystem journey में वैसे आपको बताऊँगी बायस मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की long time ago, I was 28 years old. And I know you can't say it now, but at that time I really looked like 22. I looked very young. And when I was walking to a class, I had to prove myself. Which is okay if everybody my age would have to prove themselves as well. But there were many men colleagues who didn't have to prove themselves. So they were not, I mean even my students, क्योंकि बहुत यंग होते हैं जिनको इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। पूछा जा रहा है कि जब आप यहाँ खड़ी होकर हमें पढ़ा रही हैं तो यू क्वालिफाई टू स्टैंड देयर या आर यू डाइवर्सिटी कोटा का है। और ये आप जो सोचिए कि जब बच्चों की तरफ से सवाल आ रहे हैं इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इज वेरी वेरी डीप।
प्रॉब्लम ऊपर नहीं है, प्रॉब्लम बहुत नीचे है। एक छोटा बच्चा जो है यूनिवर्सिटी के लेवल पे गया है, क्या उम्र होती है उसके 18-19 साल का, अंडर ग्रेड में होके भी आया है, उसको शायद कपड़े भी ठीक से पहनने नहीं आते, लेकिन उसको ये सवाल जरूर करते हैं कि जो यहाँ पे डेमो दे के अपने प्रोसेस से मेरिट के ऊपर खड़ी हुई है खातून, शी इज़ प्रॉब्ली नॉट हियर बिकॉज शी इज़ अ गुड टीचर, शी इज़ प्रॉब्ली हियर बिकॉज शी इज़ अ वुमन एंड शी इज़ अ डाइवर्सिटी है। तो मुझे प्रूविंग का प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। मेरी एक स्टूडेंट थी who got hired in a very big company, and that's a company that says they sort of thrive on this idea of get diverse and get inclusive and everything. And of course, the first step of being inclusive is to bring the diversity. Bringing the diversity में होता है कि they start hiring women. प्रॉब्लम ये है, और इसी को मैं इकोसिस्टम से बाद में रिलेट करूँगी कि जब आप किसी को हायर करते हैं तो आपको उसके लिए सपोर्ट सिस्टम और सपोर्ट पॉलिसीज भी क्रिएट करनी है, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता, हायरिंग के बारे में पहले सोचते हैं। अगर मुझे खुद याद है कि when I started working at Tescon Engineering back in 2004, तो आप यकीन करेंगे कि क्योंकि हम लोगों का ख्याल था कि इंजीनियरिंग इज जस्ट अ मैन जॉब, तो पूरी 8 मंजिला बिल्डिंग में देयर वाज नॉट अ सिंगल फीमेल वॉशरूम। 8 मंजिला इमारत के अंदर जहाँ पे 300 बंदा काम करता था, कोई फीमेल वॉशरूम नहीं था, बट उन्होंने डाइवर्सिटी कोटा नहीं किया, उन्होंने हायर कर लिया। तो मैं उसी के ऊपर जो है वो वापस आऊँगी कि सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट पॉलिसीज जो है उसकी ये करना जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे नसरी का जब वेकेंट क्रिएट हो गया तो फिर ज़्यादा और मुझे अप्लाई करना, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो मेरी जो स्टूडेंट थी वो एक बहुत ज़बरदस्त मल्टीनेशनल में हायर हुई, तो उन्होंने उसको हायर किया अपनी फैक्ट्री के अंदर, और उस फैक्ट्री में पहले जो थे सारे वर ऑल मेन, शी वाज द फर्स्ट फीमेल हायर। व्हेन शी केम टू मीट मी शी वाज एब्सोल्युटली स्ट्रेस्ड, आई कुड सी फ्रॉम हर फेस कि बिल्कुल उसकी हालत खराब। मैंने कहा हुआ क्या? उसने मुझे 2 महीने हुए काम करते हुए, मैं इस्लामाबाद से उस जगह पर ट्रैवल करती हूँ, जगह 2 घंटे दूर, और कहती है वहाँ पर ट्रैवल करते थे तो सामने जो बायस होता है वो होता है कि क्या मुसीबत है, फीमेल है, अच्छा इनको इज्जत देनी पड़ेगी और इनसे जो है सपोर्ट करनी पड़ेगी। चलिए वो तो मसाइल हैं, इसलिए कि अगर मैं किसी दिन ये कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना है, ये कोई और मसला है, द फर्स्ट सेंटेंस दे विल से इज के सीनियर फीमेल्स को हेड। तो उसने मुझे बड़ी अच्छी बात की, उसने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द representative of all females of Pakistan, because if I do bad, they are not going to hire another female. So you need to think about it, the kind of pressure females bring into work. It's not about themselves, it's not about their families, it is not about money. I am continuously thinking, if I do bad, it's bad for all the other women who are going to follow suit. तो ये यही प्रॉब्लम इकोसिस्टम में भी है कि इकोसिस्टम में इट्स अ फैंटास्टिक टाइम टू बी अ वुमन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ग्लोबली भी इनके ऊपर बड़ा प्रेशर है, फंडिंग भी बड़ी है, आपको इस बात पे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं कि आपकी कोई वुमेन फाउंडर है कि नहीं। तो बहुत सारे मर्दों के साथ मुझे मजाक आती है कि वैसे मैंने बेगम को घर से नहीं निकाला, लेकिन टू बी पार्ट ऑफ अ सर्टन कोहर्ट उन्होंने कहा कि बेगम को 50% इक्विटी तुम्हारे पास है। बेगम को पता भी नहीं, वो उठा लगा रहे हैं ठीक है 50% इक्विटी। तो आई टेक इट पॉजिटिव, कहते हैं एटलीस्ट उन्हें एहसास तो हुआ कि देयर इज सम यूज, क्योंकि वो तो ये कहते हैं तुम इफेक्ट नहीं किया। But ecosystem needs to grow. Ecosystem needs to provide support. मैं आपको एक एग्जांपल दूँगी, I was part of a competition and मेरा future has been part of many competitions. और उसमें they suggested कि they are fantastic competition because they give their founders very tough time. And we had classes 4 days a week from 6 p.m. to 9 p.m. I did not work for my own company for 6 p.m. to 9 p.m. because that's a family time. जब हम 5 बजे घर जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे हैं, आपको पढ़ाना है, आपको खुद अपने आप को टाइम देना है, अपने फैमिली को टाइम देना है। And for 4 days a week we had to attend 6 to 9 p.m. classes, and they would like say, it's because you are founders and you have stepped into this and you have to do well. But I thought if you remembered, empathy was missing. Empathy क्या है कि आप समझे तो सही कि अगर आपने वुमेन फाउंडर्स के लिए प्रोग्राम चलाया है, their needs and their requirements are different. 6 से 9 बजे तक देखिए तो my husband के say and going to the room, nobody disturbs me and shuts the door. I can't do that. क्योंकि बच्चे बड़े मजेदार होते हैं, उनका रेडार फॉलो होना चाहता है, अगर अम्मा जो है ना बिस्मिल्लाह से लाइव हो जाए। वैसे वो बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे अच्छा हम फोन पे जाके साइड पे बात करूँ तो कहेंगे अच्छा हम रोने का टाइम हो गया, या आप खाना खाने का टाइम हो गया, या वॉशरूम। So women have very different problems. So eventually I had a very tough time in that competition. We didn't end up winning it, but I felt so sorry for all the other women founders who were part of it. तो अब प्रॉब्लम ये है कि डाइवर्सिटी के चक्कर में you brought women, you are saying कि बहुत अच्छी बात है women founders हैं, 2% से हमें 20% पे लेके जाना है, support system किधर है? Program design कौन कर रहा है? If the men are designing the program, do not have the empathy and understanding of it, then
ये सारा इकोसिस्टम आपको ना ऊपर से मार्केटिंग का तो बहुत अच्छा शशका है, यू नो बाय मार्केटिंग इट इज फैंटास्टिक बट इवेंचुअली इट विल फॉल, ये सस्टेनेबल नहीं। तो मैं ही समझती हूँ एज अ वुमेन फाउंडर, यू नो फेसिंग प्रॉब्लम्स इन एकेडेमिया, फेसिंग प्रॉब्लम इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड नाउ फेसिंग प्रॉब्लम हियर, तो मुझे इस तरह की मिसाइल नहीं है। मैं अगेन आई विल से इट्स अ फैंटास्टिक टाइम टू बी अ वुमेन फाउंडर, बट द प्रोग्राम्स आर नॉट एम्पैथेटिक, देयर इज डाइवर्सिटी, देयर इज नो इंक्लूजन एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। कि मैंने कोटा के अंदर जो है मैंने 10 औरतें तो बिठा दी हैं, मैंने सपोर्ट सिस्टम जीरो क्रिएट किया, और मैं जब बाहर दिखा रही हूँ कि लोग आई हैव सो मेनी वुमेन, 50% of them are women, you know, applaud me. And people are applauding and they are giving awards and everything, but अगर आप deep down जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है। So I think कि वो एक मेरा experience as a corporate। Absolutely. Can we just, give her a round of applause? Not bluntly, Dr. Senior, Dr. Sharon, and I think sometimes it's very important to hear these harsh truths. To your point, कि बहुत कुछ flashy है and all that, and we don't really come out with the truth itself. So hats off to you कि आपने इस platform को use किया और जो harsh truth है उस पे बात की है. And this conversation has been really interesting, but time is of the essence here. We're running short of time, so I would like to pose one last question to all my speakers today. कि आपके सामने खवातीन हैं. In fact, not just for women, the guys who are here because they are supportive, they are here. What is the piece of advice? Because आप हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं, we've learned via experience. 10 पढ़ी, फिर उठ के, फिर सीख लिया and all that. But not everybody should go through that, right? So if you have to pass on your learnings, आप क्या कहेंगे उन्हें? कैसे? I would say survive. Survival always seems like कि बहुत मुश्किल हालात है, you are just wading through. Somehow you have to just be alive. So not to survive, but how to really fruitfully live in this ecosystem and contribute positively. Yeah. So thank you for the question and very valid. So my advice to the audience here and recording over here later online also, maybe the women empowerment or the fact that different levels of biasness should not be there. वो आपकी support की बजाय नहीं करेगी. I'm addressing to all boys and boys listening. I cannot go anywhere and find, because I also report to many offices. If they do not feel that my input to the organization is credible or worthy, I will also begin to develop my skills. So, and although एकदम से जैसे अभी किसी ने कहा कि we have to take baby steps. एकदम से कोई revolution नहीं आएगी, माना नहीं. Just finding a few, like it's not about Pakistan only, जैसे मैंने शुरू में कहा था. So I've been on a lot of panels where I talk about, for example, women in tech and STEM education. Education is very close to my heart. I researched and आपको बहुत हैरानी होगी कि नॉर्थ अमेरिका में 15% उन्होंने बात की वॉशिंग्टन की 15% women are in STEM. 15% women. उनका एजुकेशन रेशो से बहुत ज़्यादा है, only because of these biases. So this is not a culture, it is a cultural phenomenon of what at one portion of the world or it is ubiquitous everywhere at different levels. So for example, I feel we're still comparatively better if we speak about biasness in the sense that अगर तो they look at colors. So there is us. We are called as colored people. Then there are black women, black men, white women, and white men. सबसे ज़्यादा privileged white men. So we still better off. But then again, it's an effort that we won't be able to achieve if the men or men elsewhere are supported. And a lot of organizations are becoming very conscious of it. They're bringing very good interventions. I'm a product of such an organization. I feel very proud to be part of such an organization, and it's ensuring that the same empowerment is cascaded. And it's an empowerment of mindset. जैसे मैंने कहा कि अगर ये खातून को privilege करें तो उनको कहा जाता है कि फेवर करें. And likewise, आपने माइक्रो एग्रेशन असर्टिवनेस की बात की. मुझे भी लोग बहुत असर्टिव समझते हैं. So it could be
both ways. So we just have to work as a team, corporate especially at home, and support one another. Because अगर खवातीन आगे नहीं आएंगी, 51% हमारी population है, पूरी economy बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, and women are very talented. I'm sorry to spend a lot of time. I love quoting statistics, so we're just doing research in one of these verticals agriculture. आपको पता है कि 70% women economic labor force है पाकिस्तान की, 70% of farmers female. खेतों में खवातीन काम कर रही हैं वही काम जो आदमी कर रहे हैं. ये सिर्फ प्रीकंसीव नोशंस है हमारे जहन में कि औरत कमजोर है etc. वो बाहर खेत भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, हस्बैंड को भी देखती है, खाना भी पकाती है, चूल्हा भी जलाती है, लकड़ियाँ काटती है और household. And the same goes, I think, in urban citizens. जैसे मैंने कहा, that she has responsibility towards kids. We cannot move on as a nation if we are not sharing this responsibility. Boys, the message is for the boys. So thank you for being here. I think Madina ne jo kari that and have to be part of the conversation. This is not a man versus woman debate. अगर आप इसे बिल्कुल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिल गेट्स से किसी ने पूछा था सऊदी अरब में यूएनडीओ का मेंशन कि उसने कहा था कि यू थिंक कि सऊदी अरब बाय 2030 पुरानी बात है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका और यूके, तो उसने कहा था कि नो, और उसने कहा कि द रीजन इज बिकॉज सऊदी अरब में सेग्रीगेशन काफ़ी उस टाइम पे वो थी, तो वुमेन वन साइड एंड अदर साइड. उसने कहा कि a country that does not include 50% of its population in the economy can never dream of reaching there. तो बस आप इनको प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो 50% लोग खाने वाले रहेंगे हमेशा, 50% कमाने वाला, मैंने सोचा मैंने तो सिस्टम को चलो प्रेशर वो इतना सा होता है, बच्चा बसता उसे उठाया नहीं जाता, उसे कहते हैं बेटा तुझे बहन की शादी कर. और बेटी जो होती है वो चीज भी कुछ कर ले तो उसको कहते हैं कंपेयर ऐसे करते हैं बेटे को बेटी से कि बेटे को कहेंगे कि देखो उसने तो शादी करके चले जाना है, तुम देखो कितने नालायक है. यानी बेटी की भी अचीवमेंट को रिड्यूस डाउन करती है. तो मैन हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, वी आर ऑल इन इट एज अ टीम. और जब तक हम मिलके इस चीज़ को लेके आगे नहीं चलेंगे तब तक जो है इम्प्रूवमेंट सोसाइटी में नहीं आ सकती. इट्स नॉट मैन वर्सेस वुमेन, इट इज ऑल अबाउट अगर आप कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम सबको मिलकर इस चीज़ के अंदर जो है सबने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, मेरे पास काफ़ी कहने हैं. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक बात मरिया ने की, लाइक टू टेक इट फ्रॉम देयर के वुमेन आर वीक और वो कह रहा है. तो भाई मुझे ये बताएं कि हमारे बाबू बात हैं, मेरे बाबू ने लिखा होगा, आपके बाबू ने लिखा होगा, आपके भी लोगों ने लिखा होगा, किस बुनियाद पे ये आया कहाँ से? तो बहुत से सोचें जिंदगी में मसला होता है, रहते किसके पास? अपनी माँ के पास, बीवी के पास, बहन के पास. और जब आपका सपोर्ट, आपका एंकर एक खातून है, लेकिन जैसी इन्वायरमेंट चेंज हो तो होने लगी, तो किस बुनियाद पे भी कोई कंपटीशन मुझे बता दो ऐसा जो कौन कर सकता, कौन सा ऐसा रोल है जो वो तारीफ कर सकता. और फिर इस बात में हकारत कहेगी या नीचे को फील करना है कि आई टेक सपोर्ट फ्रॉम, आई एम प्राउड टू टेक सपोर्ट. बी प्राउड ऑफ इट, गो एंड सपोर्ट देम, हायर देम, एलिवेट देम, enable them, mentor them, grow them. And be proud if you are working for it. Why should you be not proud? कि मैं जी औरत घर लगे काम कर रहा हूँ, क्यों नहीं भाई? तुम ये कहते हो कि औरत घर लगे काम कर रही है, फिर अपने भी क्यों ये क्वेश्चन चेंज करते हैं? Absolutely not. This is ridiculous. Look at Goldman Sachs. Look क्या कहते हैं? JP Morgan Chase. Look at all leading organizations, corporates, fintechs, financial institutions, जो के hereditary सारे male dominated थे. हमें लीडरशिप आ गई, प्रूवन themselves. सिर्फ इसके लिए कोई जेंडर कार्ड खेलना है डाइवर्सिटी, पर डाइवर्सिटी से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. सिर्फ वुमेन बेस्ड स्टॉप नहीं होता, ट्रांसजेंडर्स भी. ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है पिछले 2 साल उन्हें पावर करने की. मैं पहला स्टार्टअप फाउंडर ट्रांसजेंडर का लेकर आने की. मेरे जो यहाँ एक्सपर्टीज हैं वो जानते हैं कि कितनी कोशिश की है, बहुत लोगों को मैंने बड़ा प्रचार किया. इतना टफ है उनके लिए, क्योंकि हमने अपने कल्चर में, अपने सोसाइटी में हटा उनको लेकर आए. और उनको कैसी जॉब दी जाती है कि क्रिएटिव लोग हैं, उनको ना कोई एंटरटेनमेंट वाली जॉब देते हैं. वाई? सो दूसरा करता है कि आप लोग जहाँ पे मैन वुमेन या एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय करने वाले या मैरिड हैं, राइट,
या फादर या मदर बनने वाली है, मैरिज मैं, whatever role you have in your life, remember this. Treat every woman with the way that you would treat any other person. Why? They should take all the roles that you and I all are sending. Only then this notion will change. कि इनको creative jobs हो, क्यों करें? They are great accountants, they are great engineers, they are great marketers. Everything can be done. Trust अगर नहीं है ना, तो enable करें. Right? So that's all what I'll say. Enough has been said.